All right, we are live. Hello, good evening, and welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another session of the Hindu analysis. Today is 24th of June 2025, and we are ready to begin. How many of you are here in the chat box live on the stream? Please give me some responses so that we can start. Revise here. Good evening. All right, waiting for the rest of you. Priyanshi is here. Zeel is here. Good evening, guys. All right, people are joining in. Okay, let's look at the agenda for the day. So, three articles to discuss. वैसे तो चार पांच discuss करेंगे, but three prime articles to discuss. One is regarding the front page article. Iran has attacked USK military bases. In which country? Can you guys quickly tell me in the chat box which country was it where US had its सबसे prime security bases, military bases in the Middle East, which have been attacked by Iran? दो जगह अटैक हुए, दो कंट्रीज में rather. एंड आपको मुझे बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला मिलिट्री बेस यूएस का जो है किस कंट्री में था जो अटैक हुआ है in the Middle East. The next is an editorial article which talks about South Asian economic integration. Then another article which talks about how inflation has come under control, how inflation has reduced, but unemployment is still not, to the mark where it should be. It is still increasing. It's not reducing. That is what we'll discuss. इसके अलावा जो है, there are a couple of other articles which we're going to discuss in the newspaper. Apart from that, after a long wait, today we'll be finally having our Menti Quiz. Primarily, majority of the questions are based on international organizations. There are 4 or 5 questions which are based on India in space. So yeah, that's what the quiz is about. We'll do it after the discussion. And then, of course, we have a vocabulary for the day, 3 new words. So that is the agenda, that is the plan of action for today, and I hope all of you guys are ready. Zeel is saying, are you feeling good now? Much better. Thank you for asking. Much better now. Qatar is the right answer. The second country is Iraq, but the answer which I was looking for is Qatar. Absolutely right. All right, let's start with our newspaper discussion. Let me just quickly present the newspaper for you all. Okay, here it is. Iran launches missiles at US bases in Qatar and Iraq. So we all know about this news, but specifically Qatar mein, in their capital of Doha, these attacks have been launched, these missiles have been launched, and obviously US would not be taking this lightly. US would be responding to this. अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस यूएस का सच नहीं आया है. कतर की गवर्नमेंट से ये रिस्पांस आया है कि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ या फिर किसी को इंजरी नहीं हुई है. They were able to intercept the response quite quickly and neutralize the response as well. And ईरान ने ऑब्वियसली कहा है कि अगर ईरान पे कोई हमला करेगा तो हम उसका बदला लेंगे. अब अगर इसमें आप फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इसको देखो तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट is Iran trying to do? Iran is trying to show the US that we won't hesitate in attacking your assets if you attack on us, if you support Israel. So उन्होंने मिसाइल अटैक लॉन्च कर दिया. कतर में जो एयरबेस है जिसपे ये लॉन्च हुआ है उसका नाम है अल उदैद एयरबेस, ALUDEID एयरबेस, जहाँ पे यूएस का लार्जेस्ट मिलिट्री प्रेजेंस है इन द वेस्ट एशियन रीजन. लगभग 10,000 यूएस के पर्सोनल है वहाँ पे. And this was sort of a retaliation against what US did through the B-2 bombers, जहाँ पे उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स को अटैक किया था, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे. 3 साइट्स, फोर्डो, नटान्स एंड इस्फहान, जो अटैक संडे को हुआ था, राइट? कल हमने डिस्कस किया था. तो कतर के लोगों ने कहा, मतलब कतर के डिफेंस ऑफिशियल्स ने कहा कि हमने तो भाई सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई इंजरी नहीं हुई. और ईरान के जो आर्मी फोर्सेस हैं उन्होंने कहा कि जो यूएस ने ब्लेटेंट मिलिट्री एग्रेशन किया ये उसका एक रिस्पांस है, एंड अभी और भी रिस्पांस हम देंगे. दे आर सेइंग दिस इज सॉर्ट ऑफ अ राइट टू डिफेंड आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. कतर की अगर हम बात करें, ज्योग्राफी को समझें अगर, तो कतर लाइज इन द साउथ ऑफ ईरान, लगभग 200 किलोमीटर साउथ ऑफ ईरान, अक्रॉस द पर्शियन गल्फ. तो कल हम जो है मैप देख रहे थे जहाँ पे हमने देखा था देयर इज ईरान, फिर उसके नीचे पर्शियन गल्फ है, इस साइड पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, उसके नीचे आपका द कंट्री ऑफ कतर लाइज. एंड दिस इज आल्सो
sort of a escalation in the whole situation which is happening. So let's see what happens next. अभी तो इतना ही हमारे पास अपडेट है. राइट इन साइड पे बायपोल्स वाली न्यूज ये इंपॉर्टेंट नहीं है. We can move ahead. City-based news is also not important for us, so we can move ahead. State-based news में देख लेते हैं. This is all politics. This is politics. Nothing important here. Nothing important here. Sharp rise in number of women Maoists killed in security ops, says data. Bring back women. Okay, this is not important for us. Final call on 3-language policy in Maharashtra schools after talks with all stakeholders. So 3-language policy, we all know, is the policy under the National Education Policy of 2020 or the New Education Policy, जिसमें आपको 3 languages सिखानी होती है. And Maharashtra जो है अभी उस पर कॉल लेगा सारे stakeholders से बात करने के बाद. Okay, this is a festival which is happening across 3 states. बीज उत्सव, जिसमें ये लोग एग्रीकल्चर को सेलिब्रेट करते हैं. This happens between the states of Rajasthan, MP, and Gujarat. You can see the women celebrating. और तो यहाँ कुछ important नहीं है. This is again politics. Okay. Nothing relevant from a CLAT perspective in the state news section. Next up is the editorial section. Iran's nuclear program, the illusion of a surgical strike. Now, although this is sort of like a deep dive into the issue, and we have already discussed this, but let's explore what this editorial is talking about. So, ये जो मोहतरमा है, ये क्या exactly कह रहे हैं? Yeah, firstly, obviously, the backdrop is the Iran's nuclear program and the military strikes which have happened on Iran by Israel and the US, and how Iran has retaliated. But she explores on why these military strikes won't work. कि कहती है ईरान की जो की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जैसे फोर्डो और नटान्स, वो बहुत ज्यादा डीप अंडरग्राउंड है, 80 से 100 मीटर अंडरग्राउंड है, एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय कंक्रीट एंड माउंटेनियस रॉक. एंड ये जो आपके बंकर बस्टिंग वाले बॉम्ब्स यूएस ने ड्रॉप किए, जिनका एग्जैक्ट नाम है GBU-57 MOP बॉम्ब्स, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट दे कैन नॉट कंप्लीटली रीच दोस साइट्स. एंड इजराइल के पास जो है वो वाले बॉम्ब्स है ही नहीं, ना वो वाले एयरक्राफ्ट्स हैं लाइक द B-2 और द B-52 which are needed to deploy them. And they are saying that even if they are damaged, Iran can quickly rebuild these enrichment facilities, जैसा कि उन्होंने 2010 में किया था, जब पहले एक साइबर अटैक हुआ था उन पे स्टक्सनेट करके. पढ़ना आप लोग उसके बारे में. 2010 स्टक्सनेट साइबर अटैक was an interesting sort of first sort of a situation जहाँ पे कुछ ऐसा साइबर अटैक वाला सिचुएशन हुआ था. Then this article, this author also tells you that how this military strategy has multiple limitations. उन्होंने कहा कि ईरान ने इजराइल ने काफी बार पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करी हैं. प्रीएम्प्टिव मतलब समझते हैं आप अटैक होने से पहले ही अटैक कर देना, जैसे इस बार इजराइल ने किया. They're saying उन्होंने इराक पे भी अटैक किया था 1981 में, सीरिया पे भी किया था 2007 में, एंड दे टारगेटेड द अर्ली स्टेज रिएक्टर्स. लेकिन ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की अगर आप बात करो तो वो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, काफी वाइड स्प्रेड है, काफी फोर्टिफाइड है, काफी बैक्ड अप बाय अ स्ट्रांग मिलिट्री है. एंड ये जो स्ट्राइक्स हैं ये ईरान के न्यूक्लियर प्लान को डिले तो कर सकते हैं, बट एलिमिनेट करना मुश्किल रहेगा, ऐसा उनका कहना है, ऐसा ऑथर का पर्सपेक्टिव है. एंड दे आर सेइंग दैट this whole of this situation is sort of risking a wider conflict. अब यूएस जब बैक कर रहा है इजराइल को and they are violating the airspace of countries, this is also sort of risking a trigger to a regional war. And अब इसमें ईरान जो है रिटेलिएट कर सकता है हिजबुल्लाह के थ्रू, which is a group based in Lebanon. They can retaliate via Iraqi and Syrian militants. They can retaliate via Houthis in Yemen. ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ईरान के, जिनको ईरान फंडिंग प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है. अप्रैल 2024 की अगर आप बात करो तो ईरान ने जो है 300 प्लस ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ अटैक किया था, शोइंग इट्स रिटेलिएटरी कैपेसिटी. सो अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ डिप्लोमेसी से निकल सकता है. डिप्लोमेसी क्या होता है? डिप्लोमेसी से निकल सकता है. एंड दे आर सेइंग दैट यूएस ने जब विड्रॉ किया था 2018 में, उसके बाद ईरान ने अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा दिया. विड्रॉ किससे किया था? JCPOA से किया था. दिस वाज अ न्यूक्लियर डील व्हिच सॉर्ट ऑफ कर्ब्ड ईरान्स न्यूक्लियर एक्टिविटी. तो यूएस ने जब विड्रॉ किया तो फिर इन्होंने फिर से अपना एनरिचमेंट बढ़ा दिया, और इनका जो कोऑपरेशन है IAEA के साथ वो इन्होंने कम कर दिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना.
अब ये लोग एक बिल भी लेके आ रहे हैं सो दैट दे कैन कंप्लीटली विड्रॉ फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. So this all of this is sort of escalating the situation rather than diffusing the situation. All the parties should come forward on a talking table and solve it diplomatically rather than with arms. That is what she is saying. ठीक है. JCPOA stands for Joint Comprehensive Plan of Action 2015 का जो. All right. Left hand side वाला उतना important नहीं है हमारे लिए. ECI taking steps. Then many images, governor should not play up divisive images. This is also not that relevant for us. Localized incident पे based है. ये वाला आर्टिकल हम करेंगे. सॉरी स्टेट ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात मोर और लेस हो रही है साउथ एशिया की ट्रेड और सिक्योरिटी के बारे में. इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, बोथ ऑफ देम आर सॉर्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड, राइट? तो जब आप मेजर ग्लोबल इवेंट्स की बात करते हो, जैसे यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जैसे पहलगाम टेरर अटैक, तो ये सिर्फ एक कंट्री को अफेक्ट नहीं करते, ये पूरे रीजन को अफेक्ट करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं. बिकॉज इनस्टेबिलिटी से एक तरीके का अनरेस्ट आता है और उससे फिर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में डिसरप्शन आता है. एवरीवन सॉर्ट ऑफ एंटर्स इनटू अ पैनिक सिचुएशन एंड उससे फिर आपका इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो अंडर परफॉर्म करता है. और यही आर्टिकल एक्सप्लोर कर रहा है कि हमारा जो साउथ एशिया का रीजन है ये बहुत ही ज्यादा लीस्ट इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड है, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत कम है. तो अगर हम इंट्रा सार्क ट्रेड की बात करें, सार्क इज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काफी सारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, तो वो जो है ग्लोबल ट्रेड का सिर्फ 5 to 7% कॉन्ट्रीब्यूट करता है. जबकि अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करो, ऑल्दो सार्क से वो काफी बड़ा है, बट स्टिल it forms 45% of global trade. अगर आप आसियान की बात करो, that forms 22% of global trade. अगर आप नाफ्ता की बात करो, that forms 25% of global trade. लेकिन सार्क का जो टोटल ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा कम है, लगभग अराउंड $23 billion का है. ठीक है. So there's a lot of untapped potential. There's a lot of opportunities which can be explored because ऐसा नहीं है कि सार्क में पॉपुलेशन कम है या सार्क में अपॉर्चुनिटीज कम है. सार्क रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. ठीक है. एंड जीडीपी की बात करें तो देयर इज ऑलमोस्ट $5 trillion ऑफ जीडीपी. एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू कंपेयर इट टू यूरोपियन यूनियन, उनकी जीडीपी तो है 18 ट्रिलियन एज कंपेयर टू 5 trillion ऑफ सार्क, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कितनी है? जस्ट लेस देन 6% ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो यू कैन सी अ मिसमैच, राइट? एंड यहाँ पे ही पोटेंशियल है, ट्रेड का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. कंट्री स्पेसिफिक आप बात करो तो ये जो रिपोर्ट है इनकी, UNESCAP करके एक बॉडी है, उन्होंने एक मॉडल बनाया है जिस मॉडल के अकॉर्डिंग दे प्रेडिक्ट दैट बांग्लादेश में अभी भी 93% ऑफ ट्रेड इज अनटैप्ड, मालदीव्स में 88%, पाकिस्तान में 86%, अफगानिस्तान में 83%, नेपाल में 76%. And they also highlight the collapse of trade between India and Pakistan, जो पहले 2018 में लगभग $2.4 billion हुआ करता था, अब 2024 में $1.2 billion पे आ गया है. Which obviously there are security reasons because which have affected this. There have been diplomatic reasons which have affected this. And पाकिस्तान का जो export है towards India वो पहले लगभग $540 million का हुआ करता था, अब वो less than $1 million रह गया है. So bare minimum रह गया है. So again, वही सारी बातें हैं कि the trade efficiencies are falling, the costs are rising, the disparity is increasing, and the trade deficits are also increasing. तो trade to GDP ratio की जब आप बात करते हो तो वो भी drop हो गया है. And barriers क्या हैं, issues क्या आ रहे हैं? First of all, प्रॉपर ट्रेड मैकेनिज्म्स नहीं है, प्रॉपर ट्रेड अग्रीमेंट्स नहीं है इन कंट्रीज के बीच में, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टेंशन है. आप इंडिया की बात करो तो इंडिया की पॉलिटिकल टेंशन पाकिस्तान से ऑब्वियसली चल रही है, श्रीलंका से भी उतनी ज्यादा बढ़िया दोस्ती नहीं चल रही इस टाइम पे, नेपाल भी थोड़ा चाइना की तरफ ज्यादा फेवर कर रहा है, बांग्लादेश वी ऑल नो व्हाट द सिचुएशन इज, म्यांमार वी ऑल नो व्हाट द सिचुएशन इज. सो अगर आप सार्क कंट्रीज की बात करो तो देयर इज अ लॉट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल टेंशंस, टर्मोइल व्हिच इज हैपनिंग नॉट जस्ट इन दोस कंट्रीज बट among the countries as well. उसके अलावा there are a lot of tariff barriers, lack of trust, and SAARC जो है as a body बहुत stagnate हो गया है and उस वजह से ट्रेड भी उतना बूस्ट नहीं हो पा रहा है. So the author suggest कि हमें जो है इंट्रा सार्क ट्रेड को बूस्ट करना पड़ेगा, आपको रीजनल वैल्यू चेन्स बनानी पड़ेगी, आपको सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे और ट्रेड बैरियर्स कम करने पड़ेंगे, आपको बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे एंड आपको अपनी जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी, तभी बात बन पाएगी.
ठीक है, यही है इस आर्टिकल का पूरी कहानी। Alrighty, moving ahead. Inflation falls but not unemployment. Now, टाइटल से ही पता चल रहा है कि आर्टिकल किस बारे में होने वाला है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन ये कहते हैं कि काफी ज्यादा कम हो गया है, 2.8% तक आ गया है इन द मंथ ऑफ मई 2025 जो डेटा है, एज अपोज टू 3.2% जो अप्रैल में था, यानी कि 0.4% का रिडक्शन हुआ है कंज्यूमर इन्फ्लेशन में। लेकिन आरबीआई का जो टारगेट है वो हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। ऑन द अदर हैंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ गया है इन द सेम पीरियड, 5.1% से 5.8% तक, जो कि क्या दिखाता है, जो कि दिखाता है आपकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, आपकी इकोनॉमी डिस्ट्रेस में है। इन्फ्लेशन भले ही कम है, लेकिन लोगों के पास अगर जॉब्स नहीं है तो फिर लोग पैसे कमाएंगे कैसे और खर्च कैसे करेंगे। देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द मॉनेटरी डेटा एंड द एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, एंड इससे आपकी ग्रोथ डेफिनेटली स्लो हो जाती है। पहले प्रेडिक्शन ये था कि हमारी ग्रोथ जो है 23-24 में 9.2% रहेगी, लेकिन 24-25 का जो लेटेस्ट प्रेडिक्शन है वो 6.5% के अराउंड है। सो ऑल द सेक्टर्स, ऑल द प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी तो नहीं, ऑल द डिफरेंट सेक्टर्स हैव स्लोड डाउन। अगर आप एग्रीकल्चर को साइड कर दो, एग्रीकल्चर में हमने ग्रोथ करी है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सर्विसेज सेक्टर जो है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो वीक हो गया है। एंड एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल वी ऑल नो रहता है इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। एग्रीकल्चर इकलौता हमारा सेक्टर था जिसने ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है, क्योंकि फूड सप्लाई हमारे बढ़ गए हैं, हमारे फूड इन्फ्लेशन कम हो गए हैं, एंड ये जो सप्लाई डिमांड का गैप है वो थोड़ा सा कम हो गया इन द फूड सेक्टर। अब इसमें आरबीआई क्या रोल प्ले करता है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, रेपो रेट से क्या होता है, कैसे डिमांड बढ़ती है, कैसे मनी सप्लाई बढ़ता है। और हमने मतलब आरबीआई ने रेपो रेट जो है कम किया, काफी बार कम किया। पहले 25 बेसिस पॉइंट्स कम किया, फिर 50 बेसिस पॉइंट्स कम किया, ताकि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो कम होए, थोड़ा एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ गए, थोड़ा कैश फ्लो इंक्रीज करने की तरफ गए। लेकिन अभी भी जो है रेपो रेट के जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत मिनिमम है। मैक्सिमम जो सर्विस सेक्टर हैं वो फॉर्मल क्रेडिट पे रिलाय नहीं करते, वो इनफॉर्मल क्रेडिट पे रिलाय करते हैं। वो अपने पड़ोस के रिश्तेदार से पैसे ले लेता है या फिर मनी लेंडर से पैसे ले लेता है, एज अपोज टू गोइंग टू अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देयरफॉर इंटरेस्ट रेट का उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ नहीं रहा है इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन जो है प्राइमरली एग्रीकल्चरल गुड के प्राइसेस से डिसाइड हो रहा है, और हाउ इज द रिलेटिव ग्रोथ बिटवीन एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, उससे डिसाइड हो रहा है। तो ये जो हम इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं, क्या ये सही स्ट्रैटेजी है या नहीं है? दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल सॉर्ट ऑफ challenges. And they say that targeting inflation has not really worked out for India. इन्फ्लेशन कम करने से आपने सप्लाई साइड को तो फिक्स कर दिया, लेकिन डिमांड जो कम है उसको कैसे फिक्स करेंगे? डिमांड तब बढ़ेगी ना जब लोगों के पास जॉब होगी, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, जब लोगों के पास पैसा होगा। सो दिस हैज सॉर्ट ऑफ पुट अस इन अ लूप, इन अ पॉलिसी पैराडॉक्स, कि इन्फ्लेशन जो है हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कम करते हैं या कम करके कम करते हैं, हमारी ग्रोथ जो है इन एनी केस नहीं हो पा रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है। और रेपो रेट को अगर हम और ज्यादा कम करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है फिर बढ़ सकता है। एंड आरबीआई जो है नाउ इट्स सॉर्ट ऑफ वर्किंग इन अ रिएक्टिव मैनर, कि अच्छा ऐसा हो गया तो चलो अब ऐसा कर देते हैं, ऐसा हो गया अब ऐसा कर देते हैं, rather than सॉर्ट ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव अबाउट द पॉलिसी, कि हम ऐसा करेंगे तो उसके बाद जो है ऐसा होना चाहिए। सो वी आर रिएक्टिंग टू सिचुएशन rather than pre-planning the situation, is what the article sort of tells you, which is not really working out well for us. ठीक है, आगे चलते हैं। गाजा टू ईरान, this we have already discussed. Pakistan's role in US West Asia calculus, this is not that relevant, but चलो जिस पढ़ लेते हैं। Asim Munir's private lunch with Trump at White House on June 18 was an unprecedented departure from protocol. पाकिस्तान ने बजट प्रेजेंट किया, डिफेंस वाज प्रोवाइडेड एन इंक्रीज्ड आउटले despite overall downsizing of expenditure. Timing of US की entry into Iran-Israel could not have been better from Pakistan's POV. Its sinking economy needs continued assistance despite the 25 IMF bailout packages it has received so far. So basically पाकिस्तान बस US को खुश करना चाह रहा है ताकि उनको थोड़ा सा कटोरे में चिल्लड़ मिल जाए, is what this is. Rising evaporative demand, this is not important for us. Okay, what else? Operation Sindoor met all objectives. 20 targets were identified, 9 attacked. Doval begins China visit for SCO meeting.
Rajnath Singh to arrive later. We have discussed this yesterday. This is the Shanghai Cooperation Organization. Defense ministers की जो meeting होनी है, उसमें हमारे national security advisors आप पहुंच चुके हैं. ठीक है. Lalu to be re-elected RJD national president. RJD is राष्ट्रीय जनता दल, which was his party. इसमें से उन्होंने इनको निकाल दिया है अपने बड़े बेटे तेज प्रताप जी को. ठीक है. Okay, nothing important here. Nothing important here. Yeah. Nothing CLAT relevant which I can find. Supreme Court deprecates trend of accused reneging on bail payment promises. अब इसका क्या मतलब है? This simply means that ये जो false promise होता है bail का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी डांट लगाई है. उन्होंने कहा है कि एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि जो एक्यूज्ड हैं वो बेल जो है सिक्योर कर लेते हैं इन केसेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, केसेस ऑफ टैक्स इवेजन, जस्ट बाय ऑफरिंग लार्ज सम ऑफ मनी इन द कोर्ट टू प्रूव दैट भाई देखो हमने तो कोई गलती नहीं करी, हम तो पैसा देके बेल देने को तैयार हैं. एंड लेटर दे सॉर्ट ऑफ बैक ट्रैक ऑन देयर प्रोमिसेस. दे चैलेंज द बेल कंडीशंस एज बीइंग इलीगल. रेनिगिंग का मतलब यही होता है कि नॉट फुलफिलिंग योर प्रोमिसेस. This is in relevance to a particular case जहाँ पे एक आदमी को अरेस्ट किया गया था मार्च में for a tax evasion of 13 crore rupees. And initially उनको मद्रास हाई कोर्ट ने बेल दे दी after making a partial payment. And फिर उसके बाद बोला गया कि he would be paying another 2.5 crore post his release. But उन्होंने वो 2.5 crore नहीं दिए, तो फिर हाई कोर्ट ने बेल रिवोक कर दी. तो वो सुप्रीम कोर्ट आ गए रिलीफ लेने की, बेल कैसे रिवोक हो गई मेरी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है भाई आप क्या कर रहे हो, लीगल प्रोसेस का अब्यूज हो रहा है ये. And this is happening repeatedly that bail conditions are not being met and lawyers are being sort of blamed without authority. So this manipulation has to stop and judicial sanctity cannot be undermined in this manner. आप credibility खराब कर रहे हो judicial officers की, आप justice को भी delay कर रहे हो. So this is how they sort of draw a parallel between Article 21 versus judicial integrity. Article 21 is right to liberty, right to freedom. Right to life and personal liberty, not right to freedom. On the other hand, judiciary integrity is also important. So yeah, that's what they have explored. कि भाई ऐसा नहीं चल सकता. Then 3-year bar experience rule for judge exam triggers concern. ये हम discuss कर चुके हैं. Nothing new here. Dairy agriculture impede India-US bilateral trade deal. India says that we are not desperate for a deal, as other countries have not signed it with US either. टैरिफ से हमें उतना नुकसान कोई नहीं होने वाला है as such. हॉर्मुज ब्लॉक में बेनिफिट इंडियन रिफाइनर्स. हॉर्मुज यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है बिकॉज ऑफ द होल इजराइल ईरान वाला थिंग, एंड दे आर सेइंग दैट दिस कुड बेनिफिट द इंडियन रिफाइनर्स. ओके, ठीक है. व्हाट एल्स? Israel strikes Iran guard site, Evin prison in Tehran and Fordo facility. तो इसराइल ने भी कुछ स्ट्राइक्स करी हैं. It's not just the US which has striked Iran or let's say ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज. इसराइल ने जो है उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास कुछ अटैक्स किए. फोर्डो, वी ऑल नो द नेम. वहाँ पे एक एनरिचमेंट फैसिलिटी, तो उसके अराउंड दे हैव अटैक. उसके अलावा दे हैव अटैक अ प्रिजन कॉल्ड एवन प्रिजन, जहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता है. And it's known for holding activists. So this is sort of symbolic कि भाई हम देखो आपके political system को attack कर रहे हैं. And Fordo nuclear facility जो है, we all know that it's buried under mountains. And US ने जो है bunker bomb से उसको bomb किया. Now Israel is also bombing it. So yeah, यही है कि भाई साथ में mutually damage कर रहे हैं US और Israel ईरान को. That is what it is. दूसरी तरफ से रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब, उन्होंने इसको कंडेम किया है कि भाई ये अनप्रोवोक्ड है, ये अनजस्टिफाइड है, लेकिन उन्होंने ईरान को कोई डायरेक्ट सपोर्ट एज सच ऑफर नहीं किया. ईरान एंड रशिया आर सॉर्ट ऑफ यू कुड से क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, बस इतना ही है इसमें. तो बाकी और क्या है अपने पास? ईरान पार्लियामेंट टेक्स अप बिल टू एंटाइज विद IAEA. मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी. International Atomic Energy Agency. After Nobel nomination, Pakistan slams Trump for bombing Iran. They said that the strike constituted a serious violation of international law. Okay. US to screen social media accounts of non-immigrant visa applications. All right.
टेस्ट मैच का आज है आखिरी दिन, आज पता चलेगा कौन जीतेगा फर्स्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड का। ठीक है, that's all about the newspaper, folks. Let's come back to our PPT and let's quickly do the vocab for the day and then we'll move to our Menti quiz. The first word for the day is mellifluous. Mellifluous मतलब होता है सुरीली मधुर आवाज, having a pleasant flowing quality suggestive of music. Melodic, sweet tone, soothing. Strident, harsh, or dissonant are antonyms. I grew up around people who had wonderful mellifluous voices. The next word is scintilla. Scintilla मतलब होता है छोटा सा, very small amount. Glimmer, shred, bit, lot, bushel, plenty are antonyms. There isn't a scintilla of evidence to prove it. So fancy word to say small quantity. And the third word is eschew. Eschew का मतलब होता है किसी चीज से पीछे हटना, किसी चीज को avoid करना. Avoid, evade, escape. Seek, accept, pursue are antonyms. The minister eschews involvement in local politics since he doesn't want to diminish his moral authority in the community. So eschew means avoiding, evading, escaping, backing out. Scintilla means a very small amount, just bits. And mellifluous means melodic, soothing, good sounding. That is it. That brings us to the end of today's discussion of the Hindu analysis and to the Menti quiz. So for people who are new, Menti quiz is a MCQ based quiz which we conduct on a platform called www.mentimenti.com. What you guys need to do is go on this particular website, open a new tab or open it on your phones, and you would be asked a number code to enter. And I'll give you that code. Let me just tell you. The code is 75256233. So it's 75256233. When you put in that code on this website, you would reach my quiz and you would be able to participate. So you guys have the next 30 seconds to quickly join the quiz and then we will begin our discussion. I'll put this number in the chat box as well. 75256233. 75256233. You have to go to www.menti.com. I'll also present it on the screen. Where is our Menti quiz? Here is the Menti quiz. All right, welcome to the GK quiz. This is the code. You can also join through this QR code by scanning it through your mobile devices. You guys have 30 seconds, quickly. I'll be back in 10 seconds. How many people have joined? Let's check. We have 21, 22, 23. Can we reach 25? Okay, we have reached 25. Okay, 24 हो गए फिर से. So I'll wait for the last 10 seconds. Let's see how many players we can get. Can we reach 30? Oh, just one left. Oh, nice. We have reached 31 players. Lovely. 32, 33. अरे क्या बात है. Crazy. All right. मैं थोड़ा और लालची हो गया हूँ. Can we do 35? Can we do 35? I don't think so. So I'll wait. I'll take a countdown till 5 and then we'll start. 5, 4, 3, 2, 1. And let's go. Let's go to the first question of today's Menti quiz, the first Menti quiz of the week. Here we go. Only 2 people got this right. The answer is every month. The chairmanship or the presidency of the UN Security Council, which has just 5 members, rotates among the council members every month. Okay? थोड़ा tough question था, I'll give you that. This is not an easy quiz. ठीक है? इतना टाइम बाद हम quiz कर रहे हैं. सारे questions easy नहीं होंगे. कुछ easy questions हैं, but
a lot of moderate level questions and a couple of difficult questions as well. So, ठीक है, every month is the right answer. I hope you guys would remember this moving ahead. Who are the two smart people who got this? Love Sight and Anshu. Good job. Well done. All righty. Let's move to question number 2. Maximum लोगों का भी खाता नहीं खुला है, but I hope इस question से खुल जाएगा. Question 2 on your screen now. Eleven people got this right. ICJ, or the International Court of Justice, is one of the chief organs of the UNO. There are total 6 chief organs. Earlier they used to be 7, then Trusteeship Council got diya gaya. But totally there are 6. UN Security Council is one of them. General Assembly is one of them. Secretariat is one of them. ICJ is one of them. And there are total 6 in number. UNESCO is not a part. All of these are bodies of the UN. The other options which you see, they're not the chief organs. Okay. All right, let's see. All got this. Okay, so 1000 points for the second question to everyone. Okay, so essentially the competition is pretty much the same as of now. Third question की तरफ हम बढ़ रहे हैं. The third question is coming up on your screen in 3, 2, 1. Let's go. A lot of you got this right. It's the UNFPA which deals with the problem of population. Absolutely right. Most of you got this right. This was an easy one. Okay. 5 people on the leaderboard got this right. Love Side, Nia, XYG, Chandralekha, and Hari. All right, let's go to question number 4. 32 players playing with us. Question number 4 coming up on your screen now. Easy question. Finally, to score some points. Oh my God, 14 people got this wrong. भाई साहब, Russia नहीं है G7 का member. क्या कर रहे हो आप? It's Canada, France, and Italy, apart from UK, US, Germany, and Japan. Russia is not the member of G7. अब आप लोगों ने डाउट में डाल दिया यार मुझे. Let me just check this once. फिर मैंने तो गलत नहीं कर दिया. Wow, the net is slow. Yeah, thankfully I'm right. Okay, so yeah, 12 people got this right. CLAT aspirant 12. क्या नाम है? बढ़िया. Thala had the fastest response. Love Site, Nia, Chandralekha, Thala, Priyanshi, XYG, Hari. CLAT aspirant, Prapti, Harish. All right, new names on the leaderboard today. Question number 5 out of 16 is on our screen now. Oops, maximum of you got it wrong. The right answer is Rome. हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनीवा नहीं होता. कुछ कुछ तो हैं यार जिनके जेनीवा में नहीं है. यूनेस्को पेरिस में है, जनरल असेंबली डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी में. वो याद होने चाहिए आपको जो जेनीवा में नहीं है. बाकी तो सब ऑलमोस्ट सारे जेनीवा में हैं. So Rome is the right answer for Food and Agriculture Organization. This is also a specialized body of the United Nations. Alrighty, love side, Mia, Thala, Priyanshi, Harish got this right. Priyanshi got it the fastest, and now the competition is getting intense. Question number 6, let's go. Question 6 on your screen now. In 3, 2, 1. This is a tough one.
Okay, good guesses. 12 people got this right. 1972 is the right answer. जिसमें पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ से अपना नाम वापस ले लिया था, कॉमनवेल्थ से बाहर आ गया था पाकिस्तान। क्यों? बिकॉज उससे जस्ट एक साल पहले एक बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ था, विच वाज द 1971 इंडो पाक वॉर और द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें ब्रिटिश ने उतना ज़्यादा कोई खास सपोर्ट किया नहीं पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान ने कहा हम आपसे कट्टी हैं, हम जा रहे हैं कॉमनवेल्थ छोड़ के। बट फिर पाकिस्तान भी पाकिस्तान होने का हमें वापस ले लो 1989 में, एंड फिर उन्होंने कॉमनवेल्थ वापस ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कॉमनवेल्थ इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच आर द वंस which were primarily ruled by Britain at some point of time. So 1972 is the correct answer. थोड़ा tough question था ये, but a lot of you got this right. All right, Nia had the fastest response. Left side, Nia, Priyanshi, Thala, Hari, Chandralekha, Harish, Sebastian, Anshu, and Nemo are on the leaderboard. Question number 7 on your screen, guys. In 3, 2, 1. Oopsies. A lot of you got tricked with this question. पूरा question शायद आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा। ओके, वेट अ सेकेंड, मैंने इसका आंसर शायद गलत मार्क कर दिया। अरे यार, माय बैड हियर, आई मेस्ड अप। देखो, इसका आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू होना था। सो आई एम रियली रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट सॉरी टू ऑल द 10 people who smartly navigated this question and answered it correctly. It's not Vijay Lakshmi Pandit. She was the first president of the UN General Assembly, but she was the sister of Jawaharlal Nehru. That is what I was trying to ask in this question, but I messed up. जल्दबाजी में। ठीक है, कोई बात नहीं। Really sorry about that. It's not Subhash Chandra Bose or Krishna Menon. Vijay Lakshmi Pandit was the first president of UNGA. She was the sister of Jawaharlal Nehru and the daughter of Motilal Nehru. Jawaharlal Nehru उनके बड़े भाई थे। Really sorry to all the people who answered it correctly. And जिन लोगों को ये free के points मिल रहे हैं, I hope that you guys don't gloat about it. चलो, कोई बात नहीं, shit happens. Question number 8 out of 16. Let's go for it. Okay, 10 people got this right. It's 1985. The date was 8th of December. The place was Dhaka, जो कि है क्वार्टर भी सार का। सार की अभी हम बात कर रहे थे, सार के फॉर्मेशन का क्वेश्चन आया। It was established in 1985. Alrighty, let's look at the leaderboard. Nia, Thala, Priyanshi, Anshu, Hari, Gyan, XYG gained points. Nia was the fastest. And that's the leaderboard. All right, let's go to question number 9 out of 16. Let's go for it in 3, 2, 1. Interesting question again. Okay, a lot of you got this right. Atal Bihari Vajpayee, who was one of our ex-prime ministers, was the first Indian to make a speech in Hindi before the United Nations General Assembly. That's correct. A.B. Vajpayee. All right, a lot of you got this right. Left side, Nia, Thala, Priyanshi, Anshu, Harish, Hari, CLAT aspirant, Sebastian, XYZ. On the leaderboard, let's go to question number 10 out of 16 coming up on your screen, guys, in 3, 2, 1. ये तो easy question है, अगर आपने static GK पढ़ी है तो। Trygve Lie is the correct answer. He was the first General Secretary of the United Nations. It's not Kurt Waldheim, it's not Ban Ki-moon, it's not Boutros Boutros-Ghali, it's Trygve Lie. Yes. Okay, थोड़ा सा moderate level का question था ये. I'll give you that.
Left side Nia, Thala, Priyanshi, and Anshu are very close to each other. Anshu had the fastest response. Let's move to question number 11. Still five questions left. Still, you guys can change the leaderboard. Let's go for it. In three, two, one. Okay, we're down to the space section now. Dr. Vikram Sarabhai is called the father of the Indian space program. It's not Dr. APJ Abdul Kalam. He's the missile man, not the father of Indian space program. All right, 17 people got this right. Vikram Sarabhai is the right answer. Nia had the fastest response again, and not a lot of changes on the leaderboard. So we'll proceed to question number 12 out of 16. Coming up on your screen in three, two, one. Let's go. When was ISRO set up? ISRO was set up in the year 1969 and it's headquartered in the city of Bengaluru. Yes, that's the correct answer. 13 people got this right. All right, let's see. What are the 13? Okay, Thala and Hari did not get this one. Priyanshi had the fastest response, climbed the spot. Left side, Nia, Priyanshi, Thala, Anshu, Harish, Nemo, CLAT. XYZ and Hari are on the leaderboard. We have three more questions left. 13th question on your screen. Sorry, four more questions left rather. Halley's Comet कितने सालों बाद दिखता है? Have you got this right? It was an easy question. 75 years is the right answer. After every 75 years, you can observe the Halley's Comet from Earth. Okay. Few of you did not get this one. Thala has reclaimed her third position from Priyanshi. Nia had the fastest response again and is closely inching towards the first spot. Left side is maintaining the first spot. Then, all right, let's move to the next question. Question number 14 out of 16. Coming up on your screen, guys, in three, two, one. Let's go. सबने जो है तुक्का मारा है यहाँ पे and the right answer is Galileo. Wait a second, is it? I think मैंने इसमें भी गड़बड़ कर दी है कुछ. I think the right answer for this is Ptolemy, option number A. I'll check it. चलो मैं check करके बता दूंगा. But I think the right answer is option number A here. Anyway, let's see who all got points for this. थाला गॉट पॉइंट्स XYZ ज्ञान अधोक्ष गॉट पॉइंट्स. गलत है आप लोग का आंसर बट ठीक है, ले लो, मस्ती कर लो, एंजॉय कर लो, फ्री के पॉइंट्स. ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. दो ब्लंडर्स हो गए आज मुझसे एक ही क्विज में. दैट्स समथिंग रेयर. ओके, which spacecraft did Rakesh Sharma make his historic trip to space? The right answer is the Soyuz T-11. भाई अपोलो 11 तो मून वाला मिशन था जिसपे जो है आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे. It's not Apollo 11, it's the Soyuz T-11, in which Rakesh Sharma became the first Indian to go into space, the first Indian cosmonaut. Absolutely right. All right, Thala had the fastest response. Left side, Nia, Thala have breached the 10,000 mark. And rest of you are also playing really well. Okay, last question of the quiz. Coming up on your screen in three, two, one. Let's go. Easy question here.
The right answer is Mars. It's not Jupiter. Olympus Mons is red color का बहुत ऊंचा mountain, even higher than Mount Everest, located on the surface of Mars. Jupiter तो यार mostly gaseous planet है, वहाँ mountain कैसे ही होगा. Mars is the right answer, and let's look at our final leader board. I think Nia has taken this one. Yes or no? Oh, missed out. Love Site has won this particular quiz. Fantastic performance, Love Site. Really well played. Please reveal your true name in the chat box so that we all can congratulate you. Equally well played by all the people on the leaderboard, especially Nia, Thala, and Priyanshi. Very neck to neck fight. Also well played, Anshu, XYZ, Clad Aspirant, Nemo, Adhoksh, and all the other players who participated. Give yourself a big pat on the back because you guys played fantastically well. XYG is saying, from where should we prepare these kind of questions? It's totally your call. You could pick up any static GK book, books like Lucent, books like Pearson. You could, use the internet, use the chat GPT, multiple sources. Ishan is saying, can these types of questions come in CLAT? Yes, they can. These are contextual questions. अब देखो जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था which was talking about सार्क, है ना. सार्क की आज हम बात कर रहे थे एडिटोरियल में. तो अगर सार्क पे मान लो कोई टॉपिकल क्वेश्चन आता है तो दे कैन आस्क यू कि व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड. सो जरूरी नहीं कि ये एज अ टॉपिक बन के आए, बट दे कैन कम एज अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, बिकॉज क्लैट ने ऐसा कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि सिर्फ करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे. Konark is love site. Very congratulations. Lot of congratulations to you, Konark Sampath. Well played. Very well played. Alrighty. Congratulations to the winners. Google says Copernicus. Copernicus ने तो ये बोला था कि sun है center में. As long as my understanding goes, as far as my understanding goes, Copernicus said that sun is the center of the solar system, whereas Ptolemy said that Earth is the center of the solar system. That is my understanding. अच्छा ठीक है. Oh, your name is Suvir. Okay. Congrats, Suvir. Well played. Very well played. चलो ठीक है. That's all for the quiz, guys. I hope this was fun. Once again, apologies for the couple of mismatched answers. Right answer choose करने में गड़बड़ हो गई. But ठीक है. What's important is learning from new questions. YT चैनल है, क्या बात है. लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो सब लोग आपके YT चैनल को भी और हमारे YT चैनल को भी. ठीक है. That's all for the day, guys. We'll meet again tomorrow with another analysis. Till then, take care. Bye bye. Signing off. Next Menti Quiz Friday को करेंगे and उसमें करेंगे current affairs. So come prepared. Bye bye. Tada. Good night.